English speaking practice. Day 1 daily. Use English sentences. Vertical bar. Hindi English example. Hello everyone. मैं हूँ ईशा और वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। अगर आपने A1 लेवल कंप्लीट कर लिया है तो अब हम एंटर कर रहे हैं A2 लेवल में। A2 में हम सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपको डेली कॉन्वर्सेशंस में नेचुरली इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। मैं पहले हिंदी सेंटेंस बोलूंगी, फिर इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगी और उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगी। और याद रखिए, पहले इंग्लिश सेंटेंस खुद बोलने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। सो लेट्स बिगिन आवर A2 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। 1. हिंदी। मैं रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश। I try to wake up early every morning. Example. I try to wake up early every morning, but sometimes I feel tired. 2. हिंदी। मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए रोज प्रैक्टिस करता हूँ। इंग्लिश। I practice every day to improve my English. Example. I practice every day to improve my English speaking skills. 3. हिंदी। मुझे इंग्लिश बोलने में पहले थोड़ी दिक्कत होती थी। English. I used to have some difficulty speaking English. Example. I used to have some difficulty speaking English, but now I'm more confident. 4. हिंदी। अब मुझे इंग्लिश बोलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इंग्लिश। Now I feel more confident speaking English. Example. I feel more confident speaking English than I did before. 5. हिंदी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इम्प्रूव कर सकूँ। इंग्लिश। I'm trying to improve my English fluency. Example. I'm trying to improve my English fluency by practicing every day. 6. हिंदी। मुझे नहीं पता कि इसका सही जवाब क्या है। इंग्लिश। I don't know what the correct answer is. Example. I don't know what the correct answer is, so I'll check it. 7. हिंदी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? English. Can you tell me how this works? Example. Can you tell me how this works? I've never used it before. 8. हिंदी। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मुझे क्या करना है? English. Can you explain what I need to do? Example. Can you explain what I need to do before we start? 9. हिंदी। मुझे लगता है कि हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। English. I think we should plan ahead. Example. I think we should plan ahead so we don't have any problems later. 10. हिंदी। मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा। English. I'll let you know as soon as I find out. Example. I'll let you know as soon as I find out what happened. 11. हिंदी। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। English. I'm working on it right now. Example. Don't worry. I'm working on it right now. 12. हिंदी। मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। English. I haven't finished my work yet. Example. I haven't finished my work yet, but I'll finish it soon. 13. हिंदी। मैं काफी समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ। English. I've been learning English for quite some time. Example. I've been learning English for quite some time, but I still want to improve. 14. हिंदी। मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा। English. I need to think about it a little more. Example. It's an important decision, so I need to think about it a little more. 15. हिंदी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। English. I can help you if you want. Example. I can help you with your English if you want. 16. हिंदी। तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। English. You shouldn't give up so easily. Example. Learning English takes time, so you shouldn't give up so easily. 17. हिंदी। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। English. I hope everything will be okay.
Example, don't worry. I hope everything will be okay. 18. हिंदी, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. English, I'm trying to understand your situation. Example, I'm trying to understand your situation before I make a decision. 19. हिंदी, मुझे लगता है कि ये पहले से बेहतर है. English, I think this is better than before. Example, your English is improving. I think this is much better than before. 20. हिंदी, मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ. English, I try to learn from my mistakes. Example, I make mistakes sometimes, but I try to learn from them. 21. हिंदी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? English, why didn't you tell me? Example, why didn't you tell me that you needed help? 22. हिंदी, मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है. English, I don't think this is the right time. Example, I don't think this is the right time to discuss it. 23. हिंदी, मैं तुम्हारे साथ इस बात पर अग्री करता हूँ. English, I agree with you on this. Example, I agree with you on this. We should start early. 24. हिंदी, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? English, what do you think we should do? Example, we have a problem. What do you think we should do? 25. हिंदी, मैं तुम्हें अपना फैसला बाद में बताऊंगा. English, I'll tell you my decision later. Example, I need some time to think. I'll tell you my decision later. 26. हिंदी, मुझे आदत नहीं है इतनी देर तक जगने की. English, I'm not used to staying up so late. Example, I'm not used to staying up so late because I usually go to bed early. 27. हिंदी, मैं पहले यहाँ काम किया करता था. English, I used to work here. Example, I used to work here before I moved to another city. 28. हिंदी, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ. English, I'm looking forward to meeting you. Example, I'm looking forward to meeting you next week. 29. हिंदी, मुझे लगता है हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहिए. English, I think we should find a solution to this problem. Example, we don't have much time, so I think we should find a solution quickly. 30. हिंदी, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है. English, it's difficult to explain what I mean. Example, it's difficult to explain what I mean, but I'll try. Speaking challenge. अब देखते हैं आपने A2 लेवल के सेंटेंसेस कितने अच्छे से सीखे. इस बार चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी. आपके पास 10 सेकंड होंगे इंग्लिश सेंटेंस बोलने के लिए. मेन 10 से 0 तक काउंटडाउन करूंगी. पहले खुद आंसर बोलना है, फिर मेरा आंसर सुनना है और मैच करना है कि आपने सही बोला या नहीं. रेडी? लेट्स बिगिन. क्वेश्चन 1. हिंदी, मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. करेक्ट आंसर. आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ. अपना आंसर मैच कीजिए. क्वेश्चन 2. हिंदी, मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. I haven't finished my work yet. Question 3. हिंदी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. Can you tell me how this work? S. Question N4. हिंदी, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Correct answer. I need to think about it a little more. Question 5. हिंदी. तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानानी चाहिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. You shouldn't give up so easily. Question 6. हिंदी. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. Why didn't you tell me? Question 7. हिंदी. तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. What do you think we should do? Oh. Question N8. हिंदी. मैं तुम्हें अपना फैसला बाद में बताऊंगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. I'll tell you my decision later. Question 9. हिंदी. मुझे आदत नहीं है इतनी देर तक जगने की. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. I'm not used to staying up so late. Question 1. 0. हिंदी. मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correct answer. I try to learn from my mistakes. अब अपना स्कोर काउंट कीजिए. 10 out of 10? Excellent. Fire. 7 to 9? Very good. आप 2 लेवल को अच्छे से समझ रहे हैं. 4 to 6? Good job. थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए. 1 to 3? Don't worry. वीडियो को दोबारा देखिए और सेंटेंसेस को लाउड वॉइस में रिपीट कीजिए. Remember, practice makes progress. आज हमने 2 लेवल के यूजफुल डेली यूज सेंटेंसेस सीखे हैं. इन्हें सिर्फ याद मत कीजिए, अपनी डेली लाइफ में उसे कीजिए. 1 में हमने बेसिक इंग्लिश सीखी. अब 2 में हम सेंटेंसेस को लॉन्गर, मोर नेचुरल और मोर यूजफुल बना रहे हैं. और हमारी जर्नी यही नहीं रुकेगी. हम स्टेप बाय स्टेप 2 से B1, B1 से B2, B2 से C1 और C1 से C2 तक जाएंगे. अगर आप इस कंप्लीट इंग्लिश जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेसन मिस मत कीजिए. मैं हूं ईशा. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश. I'll see you in the next lesson. Bye.